गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज आमे 5th जनवरी रु नेकी 18th जनवरी जाएंगे ऑलमोस्ट 2 वीक्स रो करंट अफेयर्स आज आमे कवर करिबा ओडिशा स्पेसिफिक जोटा कि बोथ ओएस आउ स्टेट एग्जाम्स पाई कि रेलेवेंट रहिबो। एज यूजुअल फर्स्ट आमे एमसीक्यू सॉल्व करिबा जोटा प्रीवियस क्लास रे दिया जाइतला एज होमवर्क और क्लास वर्क जो मैंने लाइव चैट रे आंसर करतले से माने फर्दर रिवीजन पर्पस पाई कि पुनी थर आंसर करि परिबे। पर एमसीक्यू मु 5 to 10 सेकंड्स देबी, अधिका समय मु देबिनी। इट विल वेस्ट आवर टाइम जेहेतु सबू जहाँ भी एमसीक्यू अच्छी ता रिलेटेड करंट अफेयर्स प्रीवियस क्लास रे डिस्कस हेतिला। तो 10 सेकंड्स मैक्सिमम मु देबी। जो मैंने अटेम्प्ट करि नथिले एमसीक्यू से माने आंसर करिवे लाइव चैट रे। तापरे आमे जहाँ हमर जीएस वाइज टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स अछि एज यूजुअल आमे जेमती प्रति वीक रे कवर करे ताको आमे कवर करिवा। ओके बट स्टार्ट करबा आगरु क्लास टी मते टिके खाली जणाई दियंतु ऑडियो आ वीडियो बोथ क्लियर अछि कि नाही। आई मीन मु जहाँ भी एनोटेट करूची जहाँ गोटे पीपीटी मु ओपन करिकी रखिची सब किछि क्लियर अछि कि नाही। स्पेशली ऑडियो इन पर्टिकुलर क्लियर अछि कि नाही, वॉइस ऑडिबल अछि कि नाही। 60 सेकंड्स दोची 1 मिनिट मु केही जणे भी लाइव चैट रे मते कंफर्म कर देले चलिबो। देन अदरवाइज आई विल जस्ट सिंपली अज्यूम कि सब किछि क्लियर अछि एंड मु क्लास स्टार्ट करिवी। ओके जणे कहउजंदी क्लियर अछि, ठीक अछि। क्लास रे जहाँ भी पढ़ा हबो एमसीक्यू हो तार आंसर एंड एक्सप्लेनेशन हो कि पीपीटी तार डायरेक्ट पीडीएफ आपण डाउनलोड करि परिबे बाय क्लिकिंग द लिंक इन द कमेंट सेक्शन। ओके फर्स्ट हमें टिके डिस्कस कर देबा कि आज कोन कोन टॉपिक्स कवर करियर अछि। जीएस1 जीएस2 मिसलेनियस और जीएस3 रो टॉपिक अछि। जीएस3 रे आज टिके अधिका टॉपिक अछि जेहेतु हमें 2 वीक्स रो कवर करूजे। जीएस1 रो सेकेंड ओडिशा परब इन गुवाहाटी सेलिब्रेट हेची, सेलिब्रेट होबाक जाउची 30th जनवरी रु फेब्रुअरी 1st जाए। देन जीएस2 रे अछि प्रपोज्ड बैरेज इन छत्तीसगढ़ एंड कंसर्न ओवर द उडंती रिवर। देन एसएसईपीडी एनआईईपीआईडी एमओयू गोटे साइन हेची आंक भितरे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथन सपोर्ट फॉर पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। मिसलेनियस रे अछि हमर व्यास कवि फकीर मोहन ओडिया भाषा भाषा सम्मान। Then GS paper 3 artificial nest installed for sparrow conservation in Ganjam. Godabaresh Mishra Adarsh Prathamika Vidyalaya scheme launched. Odisha's fully solar powered village upare gote achi current affairs. Then dedicated website achi gote bamboo production ପାଇଁ ki fake e ଚାଲାଣ ଉପରେ ଅଛି। we will study in our language एटा गोटे इनिशिएटिव आ ऊपर न्यूज अछि। आईआईटी भुवनेश्वर केमती गोटे सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप करिछि फॉर बॉक्साइट एक्सप्लोरेशन, वेरी इंपोर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक। No suspected Nipah virus case reported in Odisha, as it is the news is not important किंतु जेहेतु Nipah virus एठी गोटे डिजीज आसीगला एंड डिजीज उपरे प्रिलिम्स रे साइंस एंड टेक अंडर ए क्वेश्चंस फ्रेम हुए। सो Nipah virus एठी बहुत इंपोर्टेंट Nipah virus को स्टडी करिबा। देन गौर पॉपुलेशन राइज करिछि इन देब्रीगढ़। ओके सो आमे एमसीक्यू को जिबा। समस्ते एमसीक्यू रा आंसर देबे लाइव चैट रे, से भूल हो ठीक हो काइना मु आंसर एंड एक्सप्लेनेशन जेते बेले डिस्कस करबी तो सेती बेले रिवाइज हे जिवो। एंड मु एठी एडवाइस करूची जो माने भी देखि नाहंती धर जो मानकर मिस हे जाईची प्रीवियस क्लास से माने जाई कि प्रीवियस क्लास भी क्लास सरला परे देखि परिबे। With reference to the Northeast panorama recently inaugurated at Nandankanan Zoological Park, consider the following statements. Statement 1, it is designed to showcase wildlife diversity of Northeast India. Statement 2, it includes 10 nature immersive enclosures spread over more than 5 acres. The zone focuses exclusively on avian species. एटी चारोटी ऑप्शन दिया जाइछि 1 2 2 3 1 3 1 2 3 करिकी कोटा करेक्ट अछि एटा 10 सेकंड्स भितरे मते एटी समस्त आंसर करंतु लाइव चैट रे।
ओके आंसर आसिलानी वर्षा साहू कहउचंदी वर्षा पी साहू याज्ञ सेनी पंडा ए कहउचंदी ओके देखिबा इति आंसर होची ए वेरी गुड याज्ञ सेनी स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट अच्छी नॉर्थ ईस्ट एटा मु पढ़ाई प्रीवियस क्लास रे जो माने देखि नथिबे जाई देखिबे रिवाइज करिवे नॉर्थ ईस्ट पैनोरामा एट नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क सेटा डेजिग्नेट करा जाईची टू शोकेस रिच वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग दीज मामल्स है रेप्टाइल्स बर्ड्स जो माने भी से रीजन रे देखा जाउछनी स्टेटमेंट टू भी करेक्ट अछि ए जो जोन टा रहला से 10टा इमर्सिव एनक्लोजर्स जोटा स्प्रेड हेची 5 एकर्स रे created to resemble the natural habitats of the northeast. Statement 3 is incorrect. कहेंगे ना जो panorama it does not focus exclusively on avian species. ये गोटे मिक्स इनक्लूड कर मामल्स हेले बर्ड्स हेले अदर फना हेले यांको ऊपर भी फोकस करा जाउची फॉलोइंग अ लैंडस्केप इमर्जन कांसेप्ट ओके आंसर कोन हबो ए 1 and 2 ओनली Second MCQ, with reference to the legal recognition of gender identity in India, consider the following statements. Indian law allows recognition of gender identity after sex reassignment surgery. District magistrate is the competent authority to issue the gender certificates. Gender change is restricted only to identify documents and not property records. Kota correct haba abitru 10 seconds douchi mu एटी जहाँ जहाँ भी एमसीक्यू मु डिस्कस करूची सबु ऊपर ईच एंड एवरी एमसीक्यू ऊपर करंट अफेयर्स डिटेल रे डिस्कस हेची प्रीवियस क्लास रे एंड ए क्लास रे हो कि सबु क्लास रे एटा ही हबाउ जाउची जहाँ भी मु करंट अफेयर्स पढ़ेबी ता तळे मु एमसीक्यू देबी फॉर रिवीजन आंसर हबो ए 1 and 2 only statement 1 is correct कहीं ना इंडियन लॉ से अलाउ करूची लीगल रिकॉग्निशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी आफ्टर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी एसआरएस जो माने सीक करूचंदी रिकॉग्निशन एज मेल एंड फीमेल एट द सेम टाइम सेल्फ आइडेंटिफिकेशन as transgender does not require SRS as recognized under the existing legal framework. Statement 2 भी correct अच्छी district magistrate होचंदी competent authority जे कि gender certificate gender identity certificate को issue करंती based on prescribed procedures and documents. Statement 3 is incorrect कहना gender change एटा केवल identity documents को नहीं कि restricted नुहे once legally जदि recognize करि दिया जाउची gender change can be reflected in property record रे भी हेई परिबे educational certificate हो bank documents other official records रे भी change करा जाई परिबो subject to procedural compliance okay Next MCQ. With reference to the Odisha Vision 2036, consider the following statements. It aims to transform Odisha into a $500 billion economy by 2036. It seeks to position Odisha among India's top 5 developed economies. It focuses exclusively on heavy manufacturing led growth. Koda correct habo? 10 seconds douji mu. And your 10 seconds starts now. Okay, B कहउचंदी
Let's see answer of A. Statement 1 correct अछि ओडिशा विजन 2036 सेटा गोटे एम्बिशियस टार्गेट सेट करूची कि ओडिशा को गोटे 500 बिलियन इकोनॉमी बाय 2036 भाबरे ट्रांसफॉर्म करबाकू जोटा कि कोइंसाइड करूची विथ 100 इयर्स ऑफ ओडिशास फॉर्मेशन. स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट अछि ए जो विजन टी एटा सीक करूची केमिति ओडिशा को गोटे इंडिया रो टॉप 5 यू नो डेवलप्ड स्टेट इकोनॉमी हिसाब रे सेटा प्लेस करिवो फोकसिंग ऑन प्रॉस्पेरिटी इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी. स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट काइना जो स्ट्रेटजी टा इट इज नॉट लिमिटेड टू हेवी मैन्युफैक्चरिंग ओनली तार गोटे डाइवर्सिफाइड ग्रोथ अप्रोच रही जोटा कि मैन्युफैक्चरिंग है एमएसएमईज है सर्विस डिजिटल इकोनॉमी एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स ये सबू ऊपर भी ह्यूमन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन ग्रोथ ये सबू ऊपर भी सेटा फोकस करूची केवल हेवी मैन्युफैक्चरिंग ऊपर फोकस करूनी कि सेति लिमिटेड नहीं ऑब्वियसली हेवी मैन्युफैक्चरिंग ऊपर फोकस करा जाउची किंतु केवल हेवी मैन्युफैक्चरिंग ऊपर फोकस करा जाउनी ए सबू ऊपर भी इक्वली फोकस करा जाउची. MCQ 4 with reference to the goby fish Bathygobius megati consider the following statements. ओके मु एठी आउ थोरे रिपीट कर दउची कि जे कोनोसी स्पीशीज जे कोनोसी नुआ स्पीशीज धर जे न्यूज पेपर रे पढिले कि तांकर करंट अफेयर्स रे जदि शुणुचदी तो तांकर साइंटिफिक नेम टा ना जो माने न्यूज रे अछंदी काने सबु स्पीशीज रो तो साइंटिफिक नेम रटि पारिबेनी तो जो माने न्यूज रे अछंदी तांकर साइंटिफिक नेम गोटे कॉपी रे लेखुतिबे जोथरे नोट्स बनाउचंदी काना प्रीलिम्स रे कोन हुए कि डायरेक्ट ये साइंटिफिक नेम पचार दबो एंड एमती कहि दबो ए बी सी डी देकी कि एटा कोन एटा गोटे फिश रो स्पीसीज कि मे बी स्नेक और समथिंग लाइक दैट एमती किछि देई दबो जदि जानि नथिबे कि एटा फिश ताहले एथु तो किछि भी जणा पड़नी एटा फिश की स्नेक की रेप्टाइल की कोन. ओके तो एटा गोटे मु छोटो टिप एठी देली प्रीवियस क्लास रे भी देतली. एबे हम स्टेटमेंट देखिबा. इट हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन वाटर्स. It typically inhabits rocky intertidal zones. It is a large predatory fish found in deep sea habitats. Correct kona vidru 1 2 2 3 1 3 or 1 and 3 1 2 and 3 all of the above. 10 seconds starts now. आंसर हम ए 1 and 2. करेक्ट अच्छी एटा एक्चुअली एटा गोटे गोबी फिश रो स्पीसीज रो होची एटा साइंटिफिक नेम बैथिगोबियस मेगेटी एंड एटा फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करा जाय छी इंडियन वाटर रे सो एटा गोटे इंपोर्टेंट एडिशन टू इंडियाज मैराइन बायोडायवर्सिटी रिकॉर्ड्स. गोबी फिश रो जीनस हैला बैथिगोबियस जेतबे गोटे साइंटिफिक नेम थाए एटा होची फर्स्ट नेम थाए जीनस एटा होची स्पीसीज साइंस पिला एटा जानि थिबे. Inhabit rocky intertidal zones, tide pools, shallow coastal habitats. एगुड़ा होची ताकर habitat where they adapt to fluctuating tides and salinity. Statement 3 incorrect अछि काना गोबी फिश गुड़ा से माने small थांती benthic थांती coastal fishes or not large predators. So से माने deep sea environment रे inhabit करि परिबे नै. Okay. Next, with reference to migratory birds in Odisha, consider the following statements. Chilika Lake and Bhitarkanika National Park serve as wintering grounds for migratory birds. Migratory birds arrive mainly due to extremely hot conditions in their original habitats. Presence of endangered birds indicate ecological health. Ecological health of wetlands. Which of the above statements are correct? 10 seconds starts now. आंसर हम ए 1 and 3. स्टेटमेंट 1 टा ठीक अछि. चिलिका लेक और भितरकनिका नेशनल पार्क से गुडा एक मेजर विंटरिंग ग्राउंड. तिथि स्मारकी कर ठीक अछि आंसर वेरी गुड. दे आर द मेजर विंटरिंग ग्राउंड्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन ओडिशा. एटा समस्त कॉमन एटा जानिथिबे कि चिलिका और भितरकनिका को आसंती से माने जोटा कि ए नेशनल पार्क गुडा अट्रैक्ट करे स्पीसीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया साइबेरिया अदर कोल्ड रीजन्स. स्टेटमेंट 2 टा इनकरेक्ट अछि.
कहीं जो माइग्रेटरी बर्ड्स माने रहिले दे अराइव इन ओडिशा ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड एंड फूड स्कैरसिटी इन देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स नॉट बिकॉज ऑफ हॉट कंडीशन एटी इंटरचेंज कर देला कोल्ड को एटा hot information दे देला so Odisha's wetland provide moderate climate abundant food and safe habitats during winter. Statement 3 भी करेक्ट अछि कायना तांकर जो द प्रेजेंस ऑफ एंडेंजर्ड एंड सेंसिटिव बर्ड स्पीसीज एटा गोटे इंपोर्टेंट इंडिकेटर जदि से माने गोटे जगह को आसुचंती माइग्रेट करिकी सो एटा इंडिकेट करूची कि जो वेटलैंड रो इकोलॉजिकल हेल्थ अछि सेटा adequate अछि प्रॉपर अछि रिफ्लेक्टिंग गुड वाटर क्वालिटी फूड अवेलेबिलिटी एंड हैबिटेट स्टेबिलिटी. Next, with reference to the Aadhaar-based payment system introduced for paddy procurement in Odisha, consider the following statements. It ensures that MSP payments are credited directly to farmers' bank account. MSP payment directly farmer manako bank account ku credit heijibo. Only farmers registered on the PPAS portal are eligible for payment. Satellite imagery is used to determine the MSP prices for paddy. Correct answer kon habo? Correct answer of A 1 and 2 only. Statement 1 टा correct अछि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम फॉर पैडी प्रोक्यूरमेंट इन ओडिसा रे सेटा एन्श्योर करछि कि जो एमएसपी पेमेंट हला से गुडी को फार्मर मानको बैंक अकाउंट को तांकर बैंक खाता को सेटा डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जिवो रिड्यूसिंग द लीकेज एंड डिलेस. स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट कहना जो फार्मर माने पीपीएएस पोर्टल जर फुल फॉर्म होची पैडी प्रोक्यूरमेंट ऑटोमेशन सिस्टम पोर्टल सेदरे रजिस्टर्ड ऑलरेडी थिबे सेही माने ही एलिजिबल फॉर प्रोक्यूरमेंट एंड एमएसपी पेमेंट. Statement 3 is incorrect कारण जो सैटेलाइट इमेजरी एथरे एमएसपी प्राइसेस पाई की डिटरमाइन करेनी. एमएसपी is announced by the central government based on recommendation of the CACP Commission for Agricultural Cost and Prices CACP not via the satellite data. Question number 7. With reference to the Graded Response Action Plan, GRAP, consider the following statements. GRAP implemented based on air quality index levels. Stage 2 of GRAP includes restriction on construction activities. GRAP applicable only to the National Capital Region, NCR. Correct, Konabo. Your 10 seconds starts now. आंसर होची ए. स्टेटमेंट 1 करेक्ट अछि. ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान हमें जो पढ़ू सेटा इट इज ट्रिगर्ड बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई लेवल जेमती एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट हुए डिक्रीज करे फ्रॉम पुअर टू सिवियर प्लस प्रोग्रेसिवली स्ट्रिक्टर मेजर्स आर एनफोर्स्ड. स्टेज 2 ऑफ ग्रैप सेटा केतबळे इनक्लूड करा जे जेतबळे बहुत ही खराब वेरी पुअर एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स तार स्टैंडर्ड हो जाए. सो इट इंक्लूड्स restriction on certain construction activities along with measures like increased mechanized road sweeping, restriction on diesel generator sets except emergency service. Statement 3 incorrect अछि काइना ग्राफ टा ओरिजिनली नेशनल कैपिटल रीजन पाई की डिजाइन हेतला किंतु लीगली ताको केवल एनसीआर रे ही एप्लीकेबल करा जिवो सेति पाई की तो रेस्ट्रिक्टेड है कि नाही. ए जो फ्रेमवर्क टा adapt or apply ହେଇପାରିବ to other polluted urban regions as well, and similar graded response models are now being discussed or replicated elsewhere. ओके सब जाक एमसीक्यू आम डिस्कस कले. एबे आम जा करंट अफेयर्स को. फर्स्ट अच्छे आम आर्ट एंड कल्चर रो सेकेंड ओडिशा परब इन गुवाहाटी जनवरी 30 टू फेब्रुआरी 1. न्यूज रे कोन पई अछि ओडिशा परब तार सेकेंड ओडिशा परब सेटा ऑर्गेनाइज होबाक जाउची गुवाहाटी रे फ्रॉम जनवरी 30 टू फेब्रुआरी 1 टू प्रमोट ओडिशास कल्चरल हेरिटेज, tourism, handlooms, handicraft, cuisine and north in the northeastern
रीजन ए सब को प्रमोट करिया पई कि सेकेंड ओडिशा परब गुवाहाटी रे ऑर्गेनाइज होबा को जाउची केबे ऑर्गेनाइज होबा जनवरी 30 रु फेब्रुअरी 1 3 दिन चलिबो बैकग्राउंड कोन ओडिशा परब होची गोटे कल्चरल आउटरीच इनिशिएटिव ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट ऑब्वियसली ओडिशा परब तो ये ओडिशा रो जना पड़ुची ओडिशा गवर्नमेंट रो ही थिबो इनिशिएटिव टा जार एम होची कि केमती जो स्टेट रो आर्ट हैला कल्चर ट्रेडिशन इकोनॉमिक प्रोडक्ट हैला ताको ओडिशा बाहर भी ताको केमिति शोकेस करा जिवो सो ए जो इवेंट रहिला एटा फोकस करे कल्चरल डिप्लोमेसी विद इन इंडिया मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेंथनिंग पीपल टू पीपल टाइज विथ ओडिया डायस्पोरा the second edition indicates continuity and success of the first edition continue कला and successful हैला बोले कि ही second edition further organize होबा को जाउची जहाँ भी एक कॉन्टेक्स्ट रे किछि रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स अछि तारा में टिके एक्सप्लेनेशन देखिबा फर्स्ट कल्चरल डिप्लोमेसी डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट रे कहिले हमें कोन बुझे कि कल्चर आर्ट लैंग्वेज ट्रेडिशन को नै कि जो गवर्नमेंट्स अछंती दे विल बिल्ड गुडविल एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द रीजन्स विद इन अ कंट्री हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर रे एटा होची गोटे लेबर इंटेंसिव सेक्टर जे कि रूरल और ट्राइबल आर्टिसन मान को लाइवलीहुड प्रोवाइड करूची एंड इट इज ऑल्सो की टू इंक्लूसिव ग्रोथ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ओरमास कौन ओरमास रो फुल फॉर्म होची ओडिशा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी एटा गोटे स्टेट एजेंसी जे कि मार्केट एक्सेस ब्रांडिंग एंड प्रमोशन ऑफ रूरल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करे एंड एसएचजी बेस्ड एंटरप्राइजेस को भी सपोर्ट करे मिशन शक्ति होची ओडिसा रो गोटे फ्लैगशिप प्रोग्राम समस्त जानिथिबे एम्ड एट वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड मार्केट लिंकेज एडा थिला किछटा अटैच्ड रेलेवेंट कांसेप्ट जोटा हमें देखिले हाइलाइट्स कोन इवेंट रो कि ड्यूरेशन मु कहली 3 दिन धरि चलिबो 20टा एगुटे एते डिटेल्स दरकार नाही जस्ट मु खाली कॉन्टेक्स्ट पई एटी ऐड करछि 10टा फूड स्टॉल दिस डाटा आर नॉट इम्पोर्टेंट एग्जाम रे आसीबनी डिपार्टमेंट किए एठी मैक्सिमम प्रेजेंस जेमदी हैंडलूम टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट्स 6 एग्जीबिशन 6 फूड स्टॉल्स जस्ट रिमेंबर कि ए डिपार्टमेंट और मास अछि मिशन शक्ति कोरापुट कॉफी ओके ए माने सब एथरे अटैच्ड अछंदी cultural programmers organized by the language literature and culture department participation of multiple departments को माने participate करी बहुत गुडे एजेंसीज participate करिवे एडवांटेज कोन कि एथरे कल्चरल प्रमोशन होची ओडिसा रो हेरिटेज को नॉर्थ ईस्ट रे शोकेस करा जिवो तो तारा ओडिसा रो कल्चरल प्रमोशन होची इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलिबो आर्टिसन मानन को एसएचजी मानन को टूरिज्म बूस्ट होची encourages interstate tourism to ओडिसा डायस्पोरा एंगेजमेंट होजन जेमति कि जो ओडिया कम्युनिटी मानक भितर बॉन्ड स्ट्रेंथन होची जो आसाम रे अछंती फेडरल इंटीग्रेशन एनहांसेस इंटरस्टेट कल्चरल कोऑपरेशन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन आर्टिसन और एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करा जीवो फ्रॉम अदर स्टेट टू इन्वेस्ट इन ओडिसा बट डिसएडवांटेज कोन रही डिसएडवांटेज और चैलेंजेस कि आर गोटे लिमिटेड रीच रही गोटे शॉर्ट ड्यूरेशन पई एटा करा जाउची 3 दिन पई कि जोटा कि वाइडर ऑडियंस ऊपर एतटा इंपैक्ट पकेइबनी लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन भी गोटे प्रॉब्लम कारण मल्टी डिपार्टमेंटल इन्वॉल्वमेंट इट कैन कॉज एग्जीक्यूशन चैलेंजेस सस्टेनेबिलिटी इशू रही वन टाइप इवेंट एटा मे नॉट एंश्योर लॉन्ग टर्म मार्केट लिंकेज कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स high expenditure on exhibitions and logistics, limited digital outreach. Physical event may miss online audience. Way forward कौन होबो year round cultural and trade linkage को develop करा जाओ not just event based promotion. Digital marketing को e-commerce platform से तो integrate करा जाओ for artisans. ओडिशा परब को institutionalize करा जाओ as a rotational interstate cultural festival. फॉलोअप mechanisms को further strengthen करा जाओ for investment and artisan networking. Align events with tourism circuits and GI tagged products. Public private partnerships को encourage करा जाओ for scaling the outreach. MCQ टा attempt करो above current affairs ऊपर अछि आर detailed answer और explanation as it is as usual मु next class रे ही कहिबी just read and attempt the question in the live chat. With reference to Odisha Parab initiative एमती हेले एक्टिव रिकॉल जदी करिवे ना थ्रू एमसीक्यूज जहाँ भी पढुचंदी
तो जिनस बहुत भलसे और इनस्टेंटली मन रही कि एमसीक्यू ऐड करा जाउची आफ्टर ईच एंड एवरी करंट न्यूज और करंट अफेयर्स with reference to the Odisha Parab initiative. Consider the following statements. First है कि it aims to promote Odisha's cultural heritage and traditional economic activities outside the state. ଏବେ ଯାହା ବି ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିଲି ତ ସେଗୁଡ଼ା ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ଥିବ ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ସମସ୍ତେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଦେଇପାରିବେ। The event includes participation from women self-help groups under Mission Shakti. Odisha Parab is organized exclusively within Odisha. ଏଠି ତ ଯିଏ ପଢ଼ି ବି ନଥିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ତାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ ବି କରିପାରିବ। Very good, very good. Answer is correct. Next, proposed barrage in Chhattisgarh and concerns over Udanti river. News रे अच्छी कौन पाई गोटे बैरेज अपस्ट्रीम छत्तीसगढ़ रे प्रपोज हेजी जी की वाटर फ्लो को रिड्यूस कर दे पारे ऑफ उडंती रिवर इन ओडिशा तो एथिरे सीरियस कंसर्न्स अराइज करिछि फॉर एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग जेतबे वाटर ही कमी जिवो तो एग्रीकल्चर वाटर ड्रिंकिंग वाटर लाइवलीहुड आंको ऊपर गोटे हार्श इंपैक्ट पड़िबो कि न पड़िबो सो वेस्टर्न ओडिशा रे एटा ऑब्वियसली हार्श इंपैक्ट पकेबो उडंती रिवर एटा कोठू ओरिजिनेट होची ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଭର ହଉ କି କିଛି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି ତ ତାର ଜୋଗ୍ରାଫି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ତ ଉଡନ୍ତି ରିଭର ଅରିଜିନେଟ୍ କୋଉଠୁ ହୁଏ ଦଣ୍ଡକରଣ୍ୟ ଫରେଷ୍ଟରୁ जोटा गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ रे अच्छी तापरे सी मर्ज करे तेल रिवर सांगरे एट सेपुर इन कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रिवर रो लेंथ ओडिसा रे केते अराउंड 31 किलोमीटर इन नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड अराउंड 50 किलोमीटर इन कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट 2003 रे कोन हेतला उडंती सीतंदी फॉरेस्ट एरिया सेटा गोटे उडंती सीतंदी टाइगर रिजर्व हिसाब रे डिक्लेयर हैला देन छत्तीसगढ़ किछि स्टेप्स नेला टू कंस्ट्रक्ट अ बैरेज अपस्ट्रीम साइटिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नीड्स एटा कही कि से इनिशिएट कला कि गोटे बैरेज अपस्ट्रीम कंस्ट्रक्ट हबो छत्तीसगढ़ ने लाई स्टेपटा सो ओडिशा हैज नॉट रिसीव्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन डिस्पाइट पॉसिबल डाउनस्ट्रीम इंपैक्ट किसी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट अच्छी जेमति कि इंटरस्टेट रिवर वाटर शेयरिंग जो अच्छी वाटर ऑफ रिवर्स जोटा कि गोटे रु अधिका स्टेट देकी फ्लो करे स्टेट बाउंड्रीज देकी फ्लो करे सेटा होची गोटे यूनियन सब्जेक्ट अंडर रे आसे अंडर एंट्री 56 एटा मने रखिबे प्रीलिम्स पाई की बहुत इंपोर्टेंट ओके यूनियन लिस्ट अंडर आसे स्टेट्स माने से माने कोऑर्डिनेशन सीक करि परिबे थ्रू सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस सेंट्रल वाटर कमिशन एटा गोटे एपेक्स टेक्निकल बॉडी फॉर वाटर रिसोर्सेस जे रेस्पोंसिबल फॉर अप्राइजल ऑफ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट टेक्निकल असेसमेंट पाई की सेंट्रल वाटर कमिशन रेस्पोंसिबल महानदी बेसिन डिस्प्यूट उडंती ये गोटे महानदी बेसिन रो गोटे पार्ट जोटा कि अनरिजॉल्व है कि पर्यंत भी रही डिस्प्यूट रिजॉल्व हो पारानी बिटवीन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ have delayed the project approvals. Upstream downstream principle कौन activities upstream should not cause significant harm to downstream states. एटी downstream state के ओडिशा and upstream state के छत्तीसगढ़. An accepted principle in water governance. वाटर गवर्नेंस हिसाब रे वाटर गवर्नेंस प्रिंसिपल हिसाब रे अपस्ट्रीम स्टेट रो एमिति कोनोसी भी एक्टिविटी हबा कथा नुहे जोटा कि गोटे डाउनस्ट्रीम स्टेट को सिग्निफिकेंट हार्म पहुंचेबो इश्यूज विथ ओडिशास इरिगेशन प्रोजेक्ट अपर उडंती प्रोजेक्ट नुआपड़ा रे जोटा हबा को जाउ प्रपोज्ड इरिगेशन एतिकी हेक्टार्स लोअर उडंती प्रोजेक्ट बोर्ड कलाहांडी कंबाइंड बेनिफिट नियरली 4000 एकर्स अक्रॉस कलाहांडी नुआपड़ा and just a second and Bolangir Odisha approaches the center against in 2018 but approvals remain pending due to basin dispute advantage पर significance कोन जदि properly को manage करा जाई परिबो ताहाले wildlife conservation हबो एटा तार गोटे advantage so potential ecological benefit एतरे रहिछि in tiger reserve areas water regulation proper हबो flood moderation हबो in upstream areas regional development हबो infrastructure creation in Chhattisgarh disadvantage कौन ड्राइंग ऑफ द रिवर स्ट्रेच नियरली 80 किलोमीटर ऑफ उडंती इन ओडिशा में ड्राई अप एग्रीकल्चरल लॉस हम थ्रेट टू इरिगेशन डिपेंडेंट फार्मर्स ड्रिंकिंग वाटर स्कार्सिटी हम हजार हजार लोकों को ऊपर एटा गोटे हार्मफुल इंपैक्ट पकेबो तांकर ड्रिंकिंग वाटर scarcity about then livelihood loss of fishing and allied rural activities affect about federal tension lack of proper consultation violates cooperative federalism precedent risk upstream unilateral actions weaken the basin level governance interstate dialogue immediately निया जाऊ under central facilitation
वे फॉरवर्ड डिस्कस करुचे CWC लेड इम्पैक्ट असेसमेंट करा जाओ बिफोर एनी कंस्ट्रक्शन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिन लेवल एटा निया जाओ ए स्टेप टी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लिंक करा जाओ विद एनवायरमेंटल फ्लो और ई फ्लो नॉर्म्स फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा जाओ ऑफ महानदी रिवर बेसिन डिस्प्यूट यूज ऑफ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट मेकानिजम्स को यूज करा जाओ देन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट को एंश्योर करा जाओ ऑफ डाउनस्ट्रीम स्टेट्स With reference to the Udanti River issue, consider the following statements. The Udanti River is a tributary of the Mahanadi River system. Construction of upstream barrages can impact downstream irrigation and drinking water availability. Statement number 3. The Central Water Commission has already approved Odisha's upper and lower Udanti irrigation projects. Which of the above given are correct? Artificial nests installed for sparrow conservation in Ganjam. Ganjam रे sparrow conservation ପାଇଁ artificial nest, artificial बसा install ହେଇଛି. न्यूज रे अछि कोन ପାଇଁ कि नेशनल बर्ड डे जोटा 5th जनवरी रे थिला वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट माने से माने आर्टिफिशियल नेस्ट्स इंस्टॉल करिसेंती इन वासुदेवपुर विलेज ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट टू कंजर्व द रैपिडली डिक्लाइनिंग हाउस स्पैरो पॉपुलेशन. And এই जो इनिशिएटिव टा निया जाइछि it is led by अंचलिका विकास परिषद. एटा गोटे लोकल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन द स्पैरो कंजर्वेशन. स्पैरो कंजर्वेशन ड्राइव टा 2012 रे स्टार्ट हेतिला फ्रॉम बाघझरी विलेज. मेजर्स कौन अडॉप्ट हेतिला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इको फ्रेंडली आर्टिफिशियल नेट्स डिस्ट्रीब्यूट हेतिला. अर्दन पॉट्स र यूज करा जाइतिला जोटा कि बाहर समस्त घर बाहर टंगाउथिले टू अट्रैक्ट स्पैरोज फॉर ब्रीडिंग. So far 6000 plus artificial net of feeder boxes already use हेई सारची. 40 टा villages रे ये install हेई सारची in Ganjam district. Strong community participation एथरे रहिची, especially women has been a key feature. House sparrow एटा गोटे कॉमन अर्बन और रूरल बर्ड स्पीसीज जी की क्लोजली एसोसिएटेड विथ ह्यूमन सेटलमेंट्स, कंसिडर्ड एन इंडिकेटर स्पीसीज फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ. आंकर डिक्लाइन एबे देखिया को मिलुची ड्यू टू हैबिटेट लॉस, अर्बनाइजेशन, लैक ऑफ नेस्टिंग स्पेसेस एंड रिड्यूस्ड फूड अवेलेबिलिटी. आर्टिफिशियल नेस्ट्स just a second. आर्टिफिशियल नेस्ट कौन एगुड़ी को होची मैन मेड नेस्टिंग स्ट्रक्चर जोटा को डिजाइन करा जाइछि टू कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑफ द natural nesting sites due to concrete buildings, vanishing mud houses, reduced vegetation. Community based conservation project एटा गोटे community conservation approach जो थरे कि local community माने भी actively participate करूछन जोटा कि better protection, sustainability, behavioral change grassroots level रे से आणुची. एडवांटेज होची कि ऑब्वियसली नेस्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होची तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पाई कि ही होची. डिक्लाइनिंग बर्ड स्पीसीज को केमते रिवाइव करा जिवो, हेल्प करा जिवो, सेति पाई होची. इको फ्रेंडली सॉल्यूशन एटा लो कॉस्ट लोकली मेड अर्बन नेस्ट्स. कम्युनिटी ओनरशिप, विलेजर्स से माने प्रोटेक्ट करूछंदी और फीड करूछंदी स्पैरो मानको. सो देयर इज कम्युनिटी ओनरशिप. इकोलॉजिकल बैलेंस, स्पैरोज हेल्प कंट्रोल इंसेक्ट एंड सपोर्ट फूड चेन्स, कहीं ना एमाने इंसेक्ट्स ऊपर फीड करंती.
Awareness generation, link conservation with everyday life. Replicable model can be scaled to other districts and states. Disadvantage कौन आर स्केल होची लिमिटेड रही एटा गोटे विलेज लेवल रो इनिशिएटिव वाइडर एडॉप्शन आपको दरकार अर्बन कन्स्ट्रेंट्स रही डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट इन हाई राइज अर्बन एरियाज मेंटेनेंस इश्यूज रही आर्टिफिशियल नेस्ट गुड़ा तांकर रेगुलर मेंटेनेंस तांको दरकार एक्सटर्नल थ्रेट जमी पॉल्यूशन मोबाइल टावर रेडिएशन पेस्टिसाइड यूज एमाने स्टिल गोटे एक्सटर्नल थ्रेट पोज करुछंदी lack of policy backing mostly NGO driven not institutionalized वे फॉरवर्ड कौन हवा दरकार कि जो स्पैरो कंजर्वेशन को अर्बन और रूरल बायोडाइवर्सिटी प्लान सहित इनक्लूड करा जिबा दरकार बा मर्ज करा जिबा दरकार बर्ड फ्रेंडली बिल्डिंग डिजाइन्स को प्रमोट करा जिबा दरकार एनजीओस को सपोर्ट करा जिबा दरकार थ्रू गवर्नमेंट फंडिंग एंड सीएसआर इनिशिएटिव सीएसआर रो फुल फॉर्मूला कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बर्ड कंजर्वेशन को इंक्लूड करा जिबा दरकार इन स्कूल एनवायरमेंटल एजुकेशन सिटीजन साइंस मॉनिटरिंग को एनकरेज करा जिबा दरकार ऑफ बर्ड पॉपुलेशंस पेस्टिसाइड को रिड्यूस करा जाऊ पेस्टिसाइड रो यूज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करा जाऊ With reference to conservation of house sparrows in Odisha, consider the following statements. Artificial nests are used to compensate for the loss of natural nesting spaces due to urbanization. Very generalized statement. Community participation has played a crucial role in increasing sparrow populations in parts of Ganjam district. House sparrows are classified as endangered under the IUCN red list. Correct kon habo samaste ti live chat re answer karibe. Answer and explanation will be discussed in the next class. गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय GMAPV स्कीम लॉन्च होईची गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्कीम एटा लॉन्च करिसेंती हमर सीएम कोठी बाणापुर इन खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे एटा लॉन्च होईची विथ द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर 118 मॉडल प्राइमरी स्कूल्स अक्रॉस ओडिशा एंड जो स्कीम टा से गोदावरीश मिश्र ना रे रखा जाइए से जने ओडिशार एजुकेशनिस्ट थिले सोशल रिफॉर्मर थिले जे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देइथिले टू प्राइमरी एजुकेशन इन ओडिशा बाणापुर इज द बर्थ प्लेस बाणापुर को कौन पे सिलेक्ट करा जाइए कना सी तांकर बर्थ प्लेस थिला ऑब्जेक्टिव होची कि केमिति प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करा जिवो इन रूरल रिमोट एंड ट्राइबल एरियाज देन अर्बन रूरल अर्बन एजुकेशन गैप को केमिति रिड्यूस करा जिवो फर्स्ट फेज रे कोन हबो स्टेट को 12,000 कोटी टंका दिया जिवो टू डेवलप 2200 स्कूल्स लॉन्ग टर्म रे इनिशिएटिव बाय ये स्कीम टा it will set up in all 6,794 gram panchayats of Odisha in phases. Explanation फर्स्ट आमे जानबे कि गोटे मॉडल प्राइमरी स्कूल कहिले कौन बुझा जाए गोटे स्कूल जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेड थिबो टीचर्स माने प्रॉपरली ट्रेन्ड थिबे डिजिटल टूल्स भी थिबो होलिस्टिक लर्निंग फैसिलिटीज भी थिबो डिजाइन्ड टू सर्व एज ए बेंचमार्क फॉर क्वालिटी एजुकेशन जहाँ जहाँ क्वालिटी एजुकेशन रो रिक्वायरमेंट रही से सबू थिबो जेमति कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है टीचर्स डिजिटल टूल्स गोटे होलिस्टिक लर्निंग फैसिलिटीज थिबो फॉर क्वालिटी एजुकेशन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN एटा हो जे बेसिक रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स जोटा कि अर्ली ग्रेड बा अर्ली क्लासेस रे स्टूडेंट्स माने अचीव करती एंड आर कोर फोकस एरिया हैला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 रो एटा हो गोटे कोर फोकस एरिया स्टेम एजुकेशन स्टेम रो फुल फॉर्मूला साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ठीक अच्छी लर्निंग अप्रोच स्टेम को इंक्लूड करियो बा इंटीग्रेट करियो टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन स्किल्स फ्रॉम एन अर्ली स्टेज की फीचर्स रही वन मॉडल स्कूल इन ईच ग्राम पंचायत एटा करा जिवो प्री प्राइमरी रु 8th क्लास जाके रहिबो मिनिमम 100 स्टूडेंट्स पर स्कूल रहिबे कैंपस एरिया ओवर 2 एकर्स रहिबो डिजिटल क्लासरूम रहिबो स्टेम लैब्स विथ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी एथरे इंक्लूड करा जिवो FLN ऊपर फोकस करा जिवो फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करा जिवो फॉर चिल्ड्रन इन रिमोट एरियाज एडवांटेज बा सिग्निफिकेंस कोन फर्स्ट तो एटा एक्सेस को इंप्रूव करिवो टू क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एंड ट्राइबल रीजन्स
NEP 2020 goal संगरे एटा align करूची of holistic and foundational learning. Rural urban divide को bridge करूची in school education, encourage करूची early digital and the STEM exposure, strengthens human capital development, honors Odisha's educational legacy through Godabarish Mishra. Disadvantage ବା challenges ରହିଛି कि implementation capacity रे problem ଅଛି ଯେମିତି କି managing thousands of schools across the gram panchayats ଏଟା ଏଟା ଟିକେ problematic ହେଇପାରେ टीचर अवेलेबिलिटी गोटे प्रॉब्लम रिक्रुटमेंट और रिटेंशन इन रिमोट एरियाज मेंटेनेंस कॉस्ट सस्टेनिंग डिजिटल एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एटा भी पॉज करछि गोटे चैलेंज ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स एंश्योरिंग रेगुलर एंड सेफ एक्सेस फॉर चिल्ड्रन एटा भी गोटे प्रॉब्लम रहिछि एई एरिया रे मॉनिटरिंग क्वालिटी रिस्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस ओवर लर्निंग आउटकम्स वे फॉरवर्ड एंश्योर टीचर ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग को एनश्योर करा जाऊ मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क को आउरी स्ट्रेंथन करा जाऊ कम्युनिटी एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रे इन्वॉल्वमेंट करा जाऊ एथिरे लोकल कॉन्टेक्स्ट मदर टंग इंस्ट्रक्शन को इंटीग्रेट करा जाऊ इन अर्ली ग्रेड्स एडटेक और हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स को यूज करा जाऊ फेज वाइज रोल आउट करा जाऊ विथ इम्पैक्ट असेसमेंट बिफोर स्केलिंग Solve the MCQ. With reference to the Godabarish Mishra Adarsha Prathamik Vidyalaya scheme, consider the following statements. The scheme aims to establish one model primary school in every Gram Panchayat of Odisha. It focuses on foundational literacy and numeracy in line with the National Education Policy 2020. GMAPV schools will provide education only from class 1 to class 5th. वेरी इजी क्वेश्चन गोटे फैक्ट गोटे स्टेटमेंट ये एलिमिनेट करदे आंसर आसी जाऊँ ऑलरेडी मुझे हिंट दे सारे ओके लक्ष्मीकांत बेहेरा कहते 1 to 8 येस एटा को एलिमिनेट करदे आंसर आसी जाऊँ बट आंसर ऑफ एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास डिस्कस हो Odisha's first fully solar powered villages under PM Suryaghar योजना न्यूज रे इतपई अछि काइना दीटा ट्राइबल डोमिनेट विलेज मुंडिया साही एंड कंध देवभूमि नरसिंहपुर ब्लॉक रे सीए ओडिशार फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड विलेजेस हेचंती अंडर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना विलेजेस किए एटी कवर हेचंती मुंडिया साही एंड कंध देवभूमि बेनिफिशियरी 76 बीपीएल फैमिलीज इम्प्लीमेंटिंग यूटिलिटी किए टीपीसी ओडीएल टाइमलाइन होची एंटायर इंस्टॉलेशन 25 दिन रे कंप्लीट हेची फंडिंग पैटर्न सॉरी पर हाउस होल्ड सेंटर 30,000 स्टेट 25,000 बैलेंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन आउटकम कौन कि 100% सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन है जोटा कि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड सर्विस को एनेबल करूची विदाउट डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशनल ग्रिड सप्लाई इन बिटवीन जहाँ रेलिवेंट कॉन्सेप्ट अच्छे देखिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एटा हूँ गोटे सेंट्रल स्कीम टू प्रमोट रूफटॉप सोलर इन हाउस होल्ड्स ऑफरिंग सब्सिडीज से सब्सिडीज देकी तांकर छात उपरे केमती रूफटॉप सोलर प्रमोट हम से गोटे सेंट्रल स्कीम टू रिड्यूस द अपफ्रंट कॉस्ट एंड प्रोवाइड फ्री और लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी विथ ए फोकस ऑन इंक्लूसिविटी डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी कौन डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन जमती कि रूफटॉप सोलर हो गला लोकेटेड नियर यूजर्स जोटा कि ट्रांसमिशन लॉस को रिड्यूस करे रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करे एंड सूट्स रिमोट एंड ट्राइबल एरियाज
District Mineral Foundation. What is District Mineral Foundation? It is a statutory fund जोटा को create करा जाइछि to utilize the mining related revenues. Mining related जहाँ भी revenue आसे तो एटा गोटे statutory fund create करा जाइछि सेई mining related revenue को use करिवा ପାଇଁ कि for welfare and development of affected districts. जो district गुड़ा mining ପାଇଁ कि affect ହେଇଛନ୍ତି negatively ତାଙ୍କର welfare और development ପାଇଁ use କରାଯିବ. Used here to bridge the beneficiary contribution for the BPL households. Advantages कौन कि universal access, reliable electricity for remote tribal villages, cost saving हबो, monthly electricity expenditure reduce हबो, energy security, independence from erratic grid supply, human development हो जेतरे better lighting for education, power of for healthcare and livelihoods, climate action, clean energy adoption एठी देखा जाइछि, low carbon footprint रहिबो. Okay, then speed and scalability. क्विक रोल आउट जो कि डेमोन्स्ट्रेट करिबो कि रेप्लिकेबल मॉडल फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट्स. डिसएडवांटेज मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन नीड लोकल कैपेसिटी फॉर अपकीप एंड रिपेयर ପାଇଁ कि लोकल कैपेसिटी दरकार तार मेंटेनेंस ପାଇଁ कि मेंटेनेंस ऑपरेशन एसो ପାଇଁ कि स्टोरेज डिपेंडेंस बैटरी परफॉर्मेंस अफेक्ट्स द नाइट और मॉनसून रिलायबिलिटी स्किल गैप्स रही टेक्निकल नो हाउ विलेज लेवल रे तेरा नाही बा लिमिटेड अछि स्केल लिमिट्स अछि rooftop solar may not meet the future load growth without augmentation financial sustainability भी गोटे problem replacement of cost after panel or battery life way forward तो local solar technician माने रहले से माने को train करा जाओ for maintenance and troubleshooting बैटरी अपग्रेड्स को इंटीग्रेट करा जाओ एंड स्मार्ट इन्वर्टर संगे इंटीग्रेट करा जाओ फॉर रिलायबिलिटी विलेज लेवल विलेज एनर्जी कमिटीज को क्रिएट करा जाओ फॉर ओनरशिप एंड मॉनिटरिंग वेरियस लाइवलीहुड प्रोग्राम्स को सहित आपको लिंक करा जाओ रेप्लिकेट मॉडल अक्रॉस ट्राइबल एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पीरियोडिक इम्पैक्ट इवैल्यूएशन करा जाओ ऑन एजुकेशन हेल्थ एंड इनकम्स attempt the question. The initiative जने कहउछनी मैम माइनिंग रिलेटेड रेवेन्यू बुझिएनी ओके माउथर देखुची कोठी माइनिंग रिलेटेड ओके हाँ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन तो a statutory fund created to utilize mining related revenues for welfare and development of affected districts okay जोटी माइन जो डिस्ट्रिक्ट रे माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज कैरी आउट हेची एंड से जगह जहाँ भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ी माने अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ठीक अच्छे तांकर वेलफेयर और डेवलपमेंट पाई जो माइनिंग रिलेटेड रेवेन्यूज जेनेरेट हेची सेथिपाई कि गोटे स्टैट्यूटरी फंड क्रिएट करा जाइछि आउ से रेवेन्यूटा से डिस्ट्रिक्ट मानकर वेलफेयर और डेवलपमेंट पाई लागिबो ओके से फंड फर्दर इट विल बी यूज्ड हियर टू ब्रिज द बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन फॉर बीपीएल हाउसहोल्ड्स. Attempt the question now. With reference to Odisha's first fully solar powered villages, consider the following statements. The initiative has been implemented under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. The remaining beneficiary contribution was supported through the District Mineral Foundation. The project relies exclusively on conventional grid electricity for power backup. Which of the statements given above are correct? एक्जाक्टली एई केस रे बेटा कि गोटे स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देले गोटे एक्सट्रीम स्टेटमेंट अछि मु हिंट दउची आंसर आसी जिवो. वेरी गुड लक्ष्मीकांत बेहरांगर ठीक अछि आंसर. वर्षा पी साहू ए कौचदी वेरी गुड ए इज द करेक्ट आंसर. डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर बैम्बो प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड इन ओडिशा. ओडिशा गवर्नमेंट ये
ऑपरेशनलाइज करछन्ती गोटे डेडिकेटेड ई कॉमर्स वेबसाइट गोटे क्रिएट हेजी बैम्बो प्रोडक्ट पाइंकी। तो एटा होची से वेबसाइट रो एड्रेस वेब एड्रेस www.odishabambooheart.com एंड एटा क्रिएट करा जायछि मार्केट एक्सेस को एक्सपैंड करिया को फॉर लोकल बैम्बो आर्टिसंस अनाउंस्ड एट द नेशनल बैम्बो कॉन्क्लेव 2026। एमती गोटे वेबसाइट क्रिएट करा जायछि बोली एटा नेशनल बैम्बो कॉन्क्लेव 2026 रे अनाउंस हला। अनाउंसमेंट टा करा जाय करिसंती गणेश राम सिंह खुंटिया जे कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करा जायछि बाय वन फ्यूचर फाउंडेशन bringing together the policymakers, industry leaders and sustainable design experts. इनिशिएटिव रो एम कोन कि केमिति बैम्बो को गोटे की रूरल लाइवलीहुड रिसोर्स हिसाब रे एंड गोटे ग्रीन इकोनॉमी रो पिलर हिसाब रे पोजीशन करा जाओ। कॉन्क्लेव रो फोकस रही केमिति बैम्बो रो डाइवर्स यूज हबो, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, इंजीनियर्ड बैम्बो टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथनिंग द सप्लाई वैल्यू चेन, एवरीथिंग रिलेटेड टू बैम्बो टू बेनिफिट द लोकल बैम्बो आर्टिसन। मोटामोटी कह गले की इंस्टीट्यूशन जोटा कि इन्वॉल्व होची एथरे इंक्लूड द ओडिशा बैम्बो डेवलपमेंट एजेंसी। ग्रीन इकोनॉमी कहले कौन बुझे गोटे इकोनॉमिक मॉडल एटा गोटे ग्रीन इकोनॉमी जो थरे कि लो कार्बन, रिसोर्स एफिशिएंसी, सोशल इनक्लूसिव ग्रोथ एई सब जिंस को प्रमोट करा जाए एंड बैम्बो एथिरे वेल फिट होची काहेकि ना एटा रिन्यूएबल ड्यू टू इट्स रिन्यूएबिलिटी एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी। इंजीनियर्ड बैम्बो कौन प्रोसेस्ड बैम्बो प्रोडक्ट्स जमी पैनल्स है, बीम्स है, बोर्ड्स है, प्रोसेस्ड बैम्बो प्रोडक्ट्स जोटा कि कंस्ट्रक्शन और फर्निचर रे यूज हुए, ऑफरिंग स्ट्रेंथ कंपेरेबल टू टिम्बर विथ फास्टर रिन्यूएबिलिटी ताकू कुहा जाउची इंजीनियर्ड बैम्बो। इंजीनियर्ड बैम्बो मोटामोटी कहले कि जो प्रोसेस्ड बैम्बो प्रोडक्ट्स जहा कि कंस्ट्रक्शन और फर्निचर रे यूज होची ताकू कुहा जाउची इंजीनियर्ड बैम्बो। वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग, वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग होची ईच स्टेज बैम्बो रो कल्टीवेशन रो नै कि प्रोसेसिंग टू ब्रांडिंग टू मार्केटिंग ये जो स्टेजेस रही ये प्रतिटी स्टेज को इम्प्रूव करिबा टू एनश्योर हायर इनकम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स आकु कुहा जाउची वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग। डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर आर्टिसंस, डिजिटल मार्केट प्लेस डिजिटल माने जानछन्ती ऑनलाइन, मार्केट प्लेस जानले प्लेटफॉर्म गोटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जे कि मिडल मैन को रिड्यूस करिबो टू एनेबल डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स जेतेबेले कि डायरेक्टली एनलिस्ट हे गला प्रोडक्ट गोटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे तो डायरेक्टली जाइकी सेठू से वेबसाइट रो जाइकी समस्त किनि परिबे। तो एथरे कोन मिडल मैन रिड्यूस होचंदी, डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स D2C जाको कुआ जाउची एंड एक्सपैंड रीच बियॉन्ड द लोकल मार्केट्स। एडवांटेज कौन मार्केट एक्सपैंड होची, नेशनल ग्लोबल रीच फॉर ओडिशा बैम्बो आर्टिसंस तांको प्रोवाइड होची गोटे मार्केट प्लेस बा प्लेटफॉर्म, इनकम जनरेट हेबो, स्टेबल एंड डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड्स, सस्टेनेबिलिटी इट प्रमोट्स रिन्यूएबल मटेरियल ओवर टिम्बर एंड प्लास्टिक्स, पॉलिसी अलाइनमेंट एटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सपोर्ट करूची फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड, इनोवेशन पुश प्रोवाइड करूची इंजीनियर्ड बैम्बो एंड डिजाइन लेड प्रोडक्ट्स को एनकरेज करिकी। ब्रांड ओडिशा इट क्रिएट्स यूनिफाइड आइडेंटिटी फॉर बैम्बो क्राफ्ट्स। डिसएडवांटेज बा चैलेंज कौन डिजिटल डिवाइड एटा लिमिटेड डिजिटल लिटरेसी रही अमंग द रूरल आर्टिसंस, लॉजिस्टिक एंड क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग स्टैंडर्डाइजेशन रिटर्न्स रे प्रॉब्लम अच्छी, सप्लाई कंसिस्टेंसी, सीजनल एंड फ्रेगमेंटेड प्रोडक्शन, कंपटीशन अच्छी कहीं एस्टाब्लिश ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और इंपोर्ट रे कंपटीशन बहुत अच्छी, स्किल गैप्स, नीड फॉर मॉडर्न डिजाइन एंड फिनिशिंग स्किल्स। तो वे फॉरवर्ड कौन डिजिटल ट्रेनिंग एंड ऑनबोर्डिंग सपोर्ट फर्स्ट तो प्रोवाइड करा जाओ आर्टिसन मानन को। सेकंड कॉमन फैसिलिटीज सेंटर्स को स्ट्रेंथन करा जाओ फॉर प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी अश्योरेंस, इंटीग्रेट वेबसाइट विथ लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स एंड पेमेंट गेटवेज, डिजाइन इनोवेशन को प्रमोट करा जाओ थ्रू कोलैबोरेशंस एंड इंस्टीट्यूट्स, बैम्बो क्लस्टर्स को लिंक करा जाओ विथ क्रेडिट इंश्योरेंस एंड सर्टिफिकेशन, स्केल आउटरीच थ्रू CSR एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट।
Okay. Now attempt the question with reference to launch of odishabamboohut.com. Consider the following statements. वो बहुत easy MCQs attach करिछि समस्ते answer करि परिबे. The website aims to expand market access for bamboo artisans through online sales. Okay. Second statement कौन कहला? Bamboo products are being promoted as part of Odisha's green economy strategy. The initiative focuses exclusively on export markets and excludes domestic consumers. Answer कौन हबो? Correct answer कौन हबो? 10 seconds starts now. वर्षा पी साहू कहउछन्ती डी केमती हबो? आउ थरे स्टेटमेंट 3 टा केयरफुली पढ़ी की देखो. Okay. Next. Fake e-challan is now a problem. Fake e-challan scam alert, how to stay safe. State government रे deadline set करा जाइछि. For PUCC and vehicle document verification, reports have surged of fake e-challan messages. जो जे कि users मानकु trick करूछन्ती into malicious.apk files leading to data theft, WhatsApp hacking, financial loss. Yes, Yagyamseni and Tithi Smaraki A answer हबो. सो बैकग्राउंड आर कि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स माने रहिले से माने एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज थ्रू रु ई चालान्स को पठाउछन्ती जोटा फ्रॉड ई चालान बा फेक ई चालान रही छे. Messages contain APK file and fake payment links. वंस ता ऊपर क्लिक कर देले से जो एसएमएस पर व्हाट्सएप मैसेजेस जोटा फ्रॉडुलेंट साइबर हैकर्स माने पठाउछन्ती से माने कोन करबो फोन गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सनल डाटा को से माने स्टील करि नउछन्ती. विक्टिम्स आर प्रेशर टू पे फाइन्स डायरेक्टली टू द फ्रॉडस्टर्स. देन से माने आपन को ब्लैकमेल करिवे अगेंस्ट योर पर्सनल डेटा कि पर्सनल डाटा से माने लीक कर दे परंती एटसेट्रा एटसेट्रा. देन ता बदल रे से माने फाइन्स चार्ज करिवे. Ransom. Cyber police and experts ସେମାନେ advisories issue କରିଛନ୍ତି to prevent such frauds. ई चालान कहले कौन? एटा गोटे digitally issued traffic fine. ओके जोटा कि चालान जोटा कटे generated by authorized traffic systems. जानिथिबे समस्ते. Legitimate e-challan सेटा accessible only via official government portal or apps, not via downloadable apps sent on WhatsApp. केवल official portal और apps रे ही जाई कि आकु आपण access करि परिबे. ए जो WhatsApp रे link wink through रु एटा downloadable apps through रु एटा को access करा जाई पारे नाही. APK फाइल होची Android package kit. APK रो full form Android package kit used to install app and ए किट टाको यूज करिकी एप्स इंस्टॉल करा जाए फोन रे. एटा को जाए एपीके फाइल. गवर्नमेंट एजेंसी से माने केबे भी एपीके फाइल्स को मैसेज भाया से माने सेंडिंग करंतिनी फॉर चालान व्यूइंग. चालान को केवल एक्सेस करी हबो ओनली थ्रू द गवर्नमेंट वेबसाइट और पोर्टल्स और एप्स जहाँ भी ताकर ऑफिशियल. फिशिंग और मालवेयर कौन? एटा होची फ्रॉड टेक्निक्स. फिशिंग और मालवेयर होची टेक्निक जहाँ को यूज करिकी यूजर मान को ट्रिक करा जाए कि से माने जेमती से क्लिक कर देबे से लिंक ऊपर कि से एपीके फाइल को जाई कि ऐप किछि इंस्टॉल कर देबे तो तांकर जो डाटा थिबो पर्सनल डेटा थिबो सेटा को सेटा चोरी हे जिवो. एक्सेस तांकर जहाँ भी अकाउंट्स थिबो तांको फ्रॉडस्टर्स मानकु एक्सेस मिली जिवो एंड से माने एक्सटॉर्ट करिवे मनी. ऑफिशियल वेरिफिकेशन पोर्टल सिटीजन माने सबु बेले तांकर जो जहाँ भी चालान डिटेल्स रहिला से माने वेरीफाई करिवे ओनली ऑन द ऑफिशियल एम परिवहन वेबसाइट और ऐप थ्रू. हाउ टू आइडेंटिफाई द फेक ई चालान्स? फर्स्ट तो मेसेज जे कि कहूथिबो कि एई एपीके फाइल को डाउनलोड करिया को सेटा फेक.
जहाँ भी लिंक रे .gov.in डोमेन नेम नथिबो सेटा भी फेक अर्जेंट लैंग्वेज डिमांडिंग इमीडिएट पेमेंट जदि एमती किछि देखिले जे कोन जदि से एथरे एमती किछि लैंग्वेज यूज हेछि जोटा कि डिमांड करूछि इमीडिएट पेमेंट करिया को सेटा भी फेक रिक्वेस्ट टू पे फाइन्स आउटसाइड द ऑफिशियल पोर्टल दिस इज आल्सो फेक एडवांटेज बा सिग्निफिकेंस कोन प्रोटेक्ट द सिटीजन्स डेटा एंड फाइनेंस साइबर हाइजीन एंड डिजिटल अवेयरनेस को एनहांस करुची एथरे चेन हैकिंग को प्रिवेंट करुची वाया कॉम्प्रोमाइज्ड कॉन्टैक्ट्स reinforces trust in official digital governance platforms disadvantage की एबे भी डिजिटल लिटरेसी बहुत लो रही among the users panic हे जाउछन यूजर्स माने ड्यू टू द एनफोर्समेंट डेडलाइंस रैपिड एवोल्यूशन ऑफ द स्कैम टेक्निक्स जो स्कैमर्स माने रहिले फ्रॉडस्टर्स माने रहिले से माने डे टू डे तांकर टेक्निक्स को आउरी अपग्रेड करी करी चलचंदी ओवर डिपेंडेंस ऑन मैसेजिंग एप्स फॉर ऑफिशियल लुकिंग अलर्ट्स वे फॉरवर्ड की स्टेट वाइड साइबर अवेयरनेस कैंपेन्स चला जाऊ एसएमएस एडवाइजरीज को पुश करा जाऊ टू क्लैरिफाई दैट गवर्नमेंट नेवर सेंड्स एपीके फाइल्स रियल टाइम साइबर पुलिस हेल्पलाइंस को स्ट्रेंथन करा जाऊ ऑफिशियल पोर्टल्स बा एप्स को प्रमोट करा जाऊ फॉर ऑल व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज एनकरेज करा जाऊ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड रेगुलर सर्विस अपडेट्स एंड जदि भी आपण भूल बसत क्लिक करदेले कौन सी फ्रॉडुलेंट लिंक उपरे ताहले कौन करिवे फर्स्ट की पुट फोन ऑन फ्लाइट मोड इमीडिएटली फ्लाइट मोड ऑन कर देबे फोन रे सेकंड डिलीट एनी सस्पिशियस ऐप फ्रॉम ऐप सेटिंग को जाइकी जहाँ भी आपको लगुच कि यही ऐपटा सस्पिशियस अच्छी शेडी लगुच तो ताकू डिलीट कर देबे बैकअप डेटा देन फॉर्मेट द डिवाइस फर्स्ट डेटा को बैकअप करिवे तापर डिवाइस को फॉर्मेट मार देबे फोर्थ इनफॉर्म द साइबर पुलिस को इनफॉर्म करि परिबे एंड जदि आपण व्हाट्सएप टा हैक हे जाइछि ताले गोटे ईमेल पठै परिबे support@whatsapp.com को ओके now attempt the MCQ with reference to fake e-challan cyber frauds consider the following statements government authorities send .apk files to citizens to view e-challan details authentic e-challan link generally contain the .gov.in domain m parivahan platform can be used to verify genuine challan details आ भितर कोटा करेक्ट अछि yes very good Barsha Tithi A will be the correct answer we will study in our language initiative ओडिशा रे लॉन्च करा जायछि ए इनिशिएटिव रा ना होछि वी विल स्टडी इन आवर लैंग्वेज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रभाती परिडा से लॉन्च करिसेंती वी विल स्टडी इन आवर लैंग्वेज अलोंग विथ मल्टीपल वुमेन एंड चाइल्ड सेंट्रिक इनिशिएटिव्स एट लोक सभा भवन रीइंफोर्सिंग ओडिशा's focus on mother tongue early education child protection and women empowerment एंड ए इनिशिएटिव टा इम्प्लीमेंट कहा द्वारा करा जाउची वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा ड्यूरेशन रहिबो आर 5 वर्ष टार्गेट ग्रुप होचंदी 3 रु 6 वर्ष चिल्ड्रन प्री प्राइमरी एज चिल्ड्रन डिस्ट्रिक्ट सेतरे कोन कोन कवर होची केउंझर कंधमाल गजपति रायगड़ा नवरंगपुर मालकानगिरी लैंग्वेज मुंडा कुई सौरा कुवी गोंडी एंड कोया पार्टनर्स प्रथम फाउंडेशन एंड पिरामल फाउंडेशन इनिशिएटिव टा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सहित अलाइन होची मदर टंग इंस्ट्रक्शन अर्ली ईयर एटा
କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିଚିଂ young children in their home languages जोटा कि comprehension retention confidence और foundational skills तांकर improve करिवो especially critical in tribal and multilingual regions foundational literacy and numeracy FLN मु आगुरु भी आगुरु गोटे करंट अफेयर्स रे आमे डिस्कस कले एटा होची कोर रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक स्किल जोटा कि अर्ली ग्रेड्स रे अचीव करा जाए एंड दिस इज द सेंट्रल पिलर ऑफ एनईपी 2020 अंगनवाड़ी सिस्टम आईसीडीएस एटा गोटे कम्युनिटी बेस्ड सेंटर्स जोटा कि जहाँ अर्ली एजुकेशन न्यूट्रिशन और हेल्थ सर्विसेज डिलीवर करती अंगनवाड़ी वर्कर्स विल रिसीव लैंग्वेज स्पेसिफिक ट्रेनिंग मटेरियल्स एंड ऑडियो विजुअल कंटेंट अंडर दिस प्रोग्राम. Other initiatives launched the same day 100-day campaign to prevent child marriage. Community led actions in the cycle rallies, human chains, youth meetings, school or college outreach, digital campaigns. Okay, ये सब साइड बाय साइड एगुड़ी को भी लॉन्च करा दीजिए एंड पायलट टू प्रिवेंट एडोलसेंट प्रेगनेंसी एंड सपोर्ट यंग मदर्स एटा भी गोटे लॉन्च करा दीजिए लॉन्च्ड विथ यूनिसेफ सहित इन मयूरभंज जोटा कि support provide kariba across the health nutrition education social protection reskilling and rehabilitation infrastructure and capacity building residential quarters for icds field staff kandhamal both new building for state institute for women and children at barapalli bargad advantage ki eta learning outcome improve karuchi through mother tongue pedagogy अर्ली ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करिवो एफएलएन स्ट्रेंथन हबो अंगनवाड़ी वर्कर्स मान को एम्पावर करा जाउची विथ टूल्स एंड ट्रेनिंग कल्चरल इंक्लूजन को प्रमोट करा जाउची एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करा जाउची चाइल्ड प्रोटेक्शन होलिस्टिक चाइल्ड प्रोटेक्शन इतर प्रमोट हबो with anti-child marriage and adolescent health disadvantages and challenges teacher capacity gaps in multiple tribal languages material standardization across the languages scalability issue रही beyond the pilot districts monitoring outcomes in dispersed remote habitations community engagement sustain କରାଯିବା ବି ଗୋଟେ problem ଏଥିରେ ଅଛି needed over 5 years way forward की capacity building करा जाऊ and continuous capacity building करा जाऊ for अंगनवाड़ी workers then robust monitoring and evaluation दरकार scale up to more districts अधिकारु अधिका डिस्ट्रिक्ट अंडर रे आनिबा दरकार ग्रेजुअल स्केल अप टू मोर डिस्ट्रिक्ट्स बेस्ड ऑन एविडेंस कम्युनिटी आउटरीच को स्ट्रांग करा जिबा दरकार एड टेक आउट लोकल कंटेंट को इंटीग्रेट करा जिबा दरकार कन्वर्ज विद द हेल्थ न्यूट्रिशन एंड द सोशल प्रोटेक्शन Answer the question. With reference to the We Will Study in Our Language initiative in Odisha, consider the following statements. It focuses on early education for children aged 3 to 6 years using mother tongue instruction. Second, the initiative is aligned with the National Education Policy 2020. It is being implemented across all the districts of Odisha in the first phase. A 10-second starts now. Yes, A हमारा answer. Very good. ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ବର୍ଷା ସାହୁ ରାହୁଲ ସାହୁ ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ଅଛି ଏମିନେଣ୍ଟ ସ୍କଲର ନୃସିଂହ ଚରଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ଦ ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସମ୍ମାନ 2021 by the Odia Language, Literature and Culture Department for his distinguished contribution to Odia language and literature. अवार्डटा प्रेजेंट करा जायछि बाय सूर्यवंशी सूरज
Ceremony was held at Odisha Research Center re hitla to mark the birth anniversary of Fakir Mohan Senapati, recorded as the founder of modern Odia literature. Sorry. Award components. Award component रे गोटे cash prize रही and formal state recognition for lifetime literary and academic contribution. Cash prize होची 5 लाख रो गोटे cash prize रही. व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति सी ओडिया प्रोज रो आई मीन मॉडर्न ओडिया प्रोज रो पायोनियर थिले known for realist portrayal of rural society and colonial era social issues, author of the iconic novel छ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ, ओडिशा ओडिया भाषा सम्मान एटा गोटे स्टेट लेवल ऑनर recognizing exceptional service to Odia language, literature and research aimed at preserving linguistic heritage. Comparative literary studies एटा गोटे academic approach जेटा कि analyze करे texts across cultures and languages. Sadangi's work compares the House of Seven Gables with छ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ to explore the themes of property, morality and social critique. Significance होची कि sustained academic research रही ओडिया लिटरेचर रे ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स ऑफ क्रिटिकल स्कॉलरशिप कंपैरेटिव लिटरेरी एनालिसिस जोटा कि ओडिया लिटरेचर को ग्लोबल क्लासिक्स सहित लिंक करूची कंट्रीब्यूशन टू लैंग्वेज प्रिजर्वेशन एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स एडवांटेज और सिग्निफिकेंस ब्रॉडर इम्पैक्ट कल्चरल प्रिजर्वेशन रीइंफोर्सेस ओडिया लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी academic encouragement motivate the scholars and researchers global linkage eta odia literature ko position karuchi within the world literature studies institutional support strengthens the literary institutions like the odia sahitya academy with reference to the Vyasa Kavi Fakir Mohan Odia Bhasa Samman, consider the following statements. It is awarded for outstanding contributions to Odia language and literature. Fakir Mohan Senapati is regarded as the pioneer of modern Odia literature. Chha Mana Atha Guntha is a work by Nrsimha Charan Sarangi. Which of the above are correct? IIT Bhubaneswar develops satellite-based technology for bauxite exploration. IIT Bhubaneswar जो researchers माने थिले सेमाने गोटे satellite based cost effective technology develop करिसथि कोथि for bauxite prospecting in Odisha, earning recognition at the 4th Odisha Mining and Infrastructure International Conference 2026. And ये जो research team को किए lead करुथिले असीम सत्तर lead करुथिले. Study identifies potential bauxite depositional zones जोटा कि कोरापुट district और रायगड़ा district रे अछि. Findings were published in the Journal of Geochemical Exploration. Strategic relevance bauxite गोटे primary ore of aluminium. Global aluminium market expected to face supply shortages by 2030. ओडिशार इम्पोर्टेंस से 2.3 बिलियन टन्स ऑफ बॉक्साइट होल्ड करुची जोटा कि ओवर 50% ऑफ इंडियाज बॉक्साइट रिजर्व्स मोस्टली लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट्स जोटा कि गोटे डिफिकल्ट आउ इको सेंसिटिव टेरेन. बॉक्साइट होची गोटे सेडिमेंटरी रॉक एंड चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम essential for aerospace, construction, transport and packaging industries. Hyperspectral remote sensing एटा गोटे satellite based technique जे के data capture करे across hundreds of narrow spectral bands enabling precise identification of minerals based on their spectral signatures. Spectral signature एबे कोन? Spectral signature होची गोटे unique pattern of electromagnetic energy reflected or absorbed by materials like bauxite जोटा कि satellites मान को allow करे कि से मान को distinguish करिया को from surrounding rocks. First order mineral mapping
एटा होची गोटे प्रिलिमिनरी रीजनल केस आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट ऑफ मिनरल पोटेंशियल जोन्स मिनरल पोटेंशियल जोन्स मान को आइडेंटिफाई करिबार एटा को ए मैपिंग टेक्निक को इंक्लूड करा जाए बा यूज करा जाए व्हिच गाइड्स डिटेल ग्राउंड लेवल एक्सप्लोरेशन लेटर की फीचर्स ऑफ द आईआईटी भुवनेश्वर टेक्नोलॉजी हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट इमेजरी को यूज करा जाए जोटा कि फील्ड सर्वे जियोकेमिकल एनालिसिस पेट्रोग्राफिक स्टडीज लैबोरेटरी स्पेक्ट्रल वैलिडेशन एगुडी को इंटीग्रेट करा जाए लार्ज स्केल मैपिंग को एनेबल करा जाए ऑफ बॉक्साइट जोन्स फर्स्ट सच रिमोट एंड सेंसिंग बेस्ड असेसमेंट इन ओडिशा एडवांटेज होची कि एटा होची कॉस्ट इफेक्टिव एटा एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग फील्ड एक्सप्लोरेशन को रिड्यूस करूची इको फ्रेंडली एटा डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करूची इन द फ्रजाइल ईस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम स्पीड रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल रिच जोन्स strategic security supports the domestic aluminum supply policy support planners ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି in prioritizing their exploration zones scalability ଏଟାକୁ replicate ବି କରାଯାଇ ପାରିବ for other minerals and regions डिसएडवांटेज किसी है कि आर जो इनिशियल डेटा कॉस्ट हाई रेजोल्यूशन हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा एटा बहुत एक्सपेंसिव हो पारे ग्राउंड वैलिडेशन एते दरकार सैटेलाइट रिजल्ट्स इट रिक्वायर्स फील्ड कन्फर्मेशन टेक्निकल एक्सपर्टीज एतेटा नाही ट्रेन जियोलॉजिस्ट माने एतेटा नाहांती रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट्स नाहांती टेरेन कन्स्ट्रेंट्स रही जेमती कि डेंस फॉरेस्ट हला सेटा वैलिडेशन एक्सेस को लिमिट करूची डाटा इंटरप्रिटेशन रे भी रिस्क रही वे फॉरवर्ड इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी इनटू स्टेट एंड नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स स्क्रीनिंग टूल हिसाब रे को यूज करा जाओ बिफोर डिटेल ड्रिलिंग एप्लीकेशन को एक्सपैंड करा जाओ टू अदर क्रिटिकल मिनरल्स कैपेसिटी बिल्ड करा जाओ इन रिमोट सेंसिंग एंड एआई बेस्ड मिनरल मैपिंग एक्सप्लोरेशन को एंश्योर करा जाओ aligns with environmental safeguards and the tribal rights industry academia collaboration promote करा जाओ for sustainable mining with reference to the satellite based bauxite exploration technology developed by the IIT Bhubaneswar consider the following statements it uses hyperspectral satellite remote sensing to identify bauxite bearing zones Odisha accounts for more than half of India's bauxite reserves. The technology eliminates the need for any field level geological validation. आ भितरु को statement टा correct अछि. Now, no suspected Nipah virus case reported in Odisha. So, केतरा सस्पेक्टेड केस रिपोर्ट हैला न हैला एटा इम्पोर्टेंट नुआ किंतु जेहेतु निपा भाइरस अच्छी न्यूज रे तो आमे निपा भाइरस को आज डिटेल्स रे पढ़िबा सो फाइ इन न्यूज ओडिसा रो जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर अछंदी मुकेश महालिंग से स्टेट करछंदी से स्टेटमेंट देइछंदी कि किछि भी निपा भाइरस रो केस रिपोर्ट हेनी ओडिसा रे फॉलोइंग डिटेक्शंस इन वेस्ट बेंगल ले किछटा केस बाहरला परे से स्टेट करछंदी ओडिसा रे सेमती किछि केस बाहरनी The state has issued alerts to bordering districts and intensified vigilance. Good high level review meeting heitila was convened to access the preparedness after reports from West Bengal. Attendees included senior health officials. These are not important. के attend कर दिले just खाली टिके roughly read कर देबे PDF download कला परे कि
डायरेक्शंस कौन दिया जाइतला कि इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करा जाऊ एंड रिपोर्टिंग करा जाऊ जदि किसी सस्पेक्टेड केस अराइज हेछि तो adequate medicines PPE kit isolation facility equipment एसबु अच्छी कि ना इंश्योर करा जाऊ public awareness maintain करा जाऊ avoiding panic state is on the heightened surveillance especially in border district जो district गुड़ा वेस्ट बेंगल को border करूची ओके एबे हमें टिके पढ़िबा निपा भाइरस ऊपर टिके डिटेल्स रे निपा भाइरस हाँ निपा भाइरस एटा गोटे बहुत ही डेंजरस भाइरस जोटा कि सीरियस डिजीज कॉज करे ह्यूमन बींग्स रे स्पेशली सीरियस डिजीज इन ह्यूमंस मानकरे से कॉज करे इट मेनली अफेक्ट्स कौन से अफेक्ट करे इट मेनली अफेक्ट्स नोट डाउन करिवे एगुडा सब वेरी इंपोर्टेंट ब्रेन encephalitis and lungs respiratory illness okay and eta gote kon eta hoji gote zoonotic disease mane hoji it is spread from animals to humans okay and आर बहुत ही हाई डेथ रेट रही हाई फैटालिटी रेट्स रही so even small outbreaks can taken are taken very seriously किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन मुझे दउची कि निपा भाइरस आसीची कोठू निपा भाइरस सेटा फर्स्ट आइडेंटिफाई हेतला 1998 1999 रे मलेशिया रे and it was named after Sungai निपा विलेज परे आउटब्रेक्स रिपोर्ट हेतला बांग्लादेश रे आउ इंडिया रे मेनली केरला रे नेचुरल कैरियर्स किए निपा भाइरस रो फ्रूट बैट्स और टेरोपस स्पीशीज फ्रूट बैट्स और फ्लाइंग फॉक्सेस से माने एक्चुअली ए माने होचंदी कैरियर ठीक अछि ए माने एक्चुअली डिजीज दे डू नॉट फॉल सिक से सिंपली कोन करंती कैरी करंती आ वायरस टाको स्प्रेड करंती दिस इज एक्चुअली अ प्रीलिम्स पॉइंट एंड जस्ट रिमेंबर दे डू नॉट फॉल सिक they just simply carry and spread the virus तांकु रोग हुएनि ट्रांसमिशन बैट टू ह्यूमन बाय कंटामिनेटेड फूड ह्यूमन टू ह्यूमन बाय क्लोज कांटेक्ट एमती है कि स्प्रेड हे चले तो निपा भाइरस हम एठी जानले केमती स्प्रेड होची एनिमल टू ह्यूमन होची जो ह्यूमन माने फ्रूट्स खाउचंदी जोटा कि कंटामिनेट हेची विथ बैट सलाइवा और यूरिन ठीक अच्छे तांको निपा भाइरस हम बा रॉ डेट पाम सैप को पीले रॉ डेट पाम सैप को भी पीले निपा भाइरस हम जोटा कि कंटामिनेट हेथिबो बाय बैट्स एंड दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर बांग्लादेश एटा तो हला ट्रांसमिशन रो गोटे एमिति आउ आउ केमिति ट्रांसमिट होची पिग्स मानक थ्रू ट्रांसमिट होची पिग्स टू ह्यूमंस मलेशिया रे पिग्स माने इंटरमीडिएट होस्ट हिसाब रे काम करथले इंटरमीडिएट होस्ट तो फार्मर्स माने कोन हेले से माने इन्फेक्ट हेले व्हाइल हैंडलिंग द पिग्स ह्यूमन टू ह्यूमन तापरे मु कहिछि कि देन ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हुअंती थ्रू क्लोज कांटेक्ट वाया बॉडी फ्लूइड्स सलाइवा है ब्लड यूरिन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड एटा हॉस्पिटल सेटिंग रे बहुत कॉमन एंड फैमिली केयर रे भी बहुत कॉमन डिजीज सर्वेलेंस continuous systematic collection and analysis of health data to detect outbreaks early and trigger rapid response isolation and infection control जो suspected case तांको isolate कर दिया जिवो healthcare workers मान को PPE use करिया को जिवो to prevent the nosocomial spread symptoms कौन निपा वायरस रो कि 15 symptoms तुरंत appear हुए नहीं
symptoms 5 ରୁ 14 दिन ପରେ symptoms appear हबा start करिवो after infection early symptoms जेमति कि fever हबो headache हबो muscle pain vomiting sore throat ए सब होची symptom and severe symptoms रे कोन जाउची brain inflammation जाउची जोटा कि encephalitis dizziness confusion seizure coma okay and बहुत patient they deteriorate very fast ओडिशा जहाँ मेजर नहीं तार सिग्निफिकेंस होची कि अर्ली जेतबेले से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मान को अलर्ट करी दिया जाइची टू रिड्यूस इंपोर्टेशन रिस्क हॉस्पिटल्स मान को प्रिपेयर करा जाइची टू एंश्योर रैपिड कंटेनमेंट इफ केस इमर्जेस कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस अक्रॉस सर्वेलेंस टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट देन पब्लिक रीअश्योरेंस प्रिवेंट करूची पैनिक एंड मिसइनफॉर्मेशन एटा वन हेल्थ अप्रोच सहित भी अलाइन करूची डिसएडवांटेज हला कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन रिस्क रही ड्यूरिंग अर्ली स्टेज जोटा मु कहली कि सिम्पटम्स 5 ରୁ 14 दिन ପରେ ଯାଇକି इन्फेक्शन रो सेटा देखा दउची डायग्नोस्टिक टर्न अराउंड टाइम इफ सैंपल्स नीड एक्सटर्नल लैब्स पब्लिक मिसइनफॉर्मेशन वाया सोशल मीडिया सेटा स्प्रेड होची इंटरस्टेट मोबिलिटी कॉम्प्लिकेट होची कॉम्प्लिकेट कंटेनमेंट को कॉम्प्लिकेट करूची रियल टाइम सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करा जाऊ इन बॉर्डर एंड हाई मोबिलिटी एरियाज लैब रेडीनेस को इंश्योर करा जाऊ एंड रैपिड सैंपल ट्रांसपोर्ट करा जाऊ ट्रेनिंग ड्रिल्स कंडक्ट करा जाऊ फॉर क्लिनिशियंस एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स रिस्क कम्युनिकेशन को इंटेंसिफाई करा जाऊ ऑन सिम्टम्स एंड डूज एंड डोंट्स नेबरिंग स्टेट्स मान सहित कोऑर्डिनेशन करिके डाटा शेयर करा जाऊ पीपी किट और क्रिटिकल केयर सप्लाईज को रो स्टॉक बढ़ा जाऊ हॉस्पिटल्स मान करे Answer the question with reference to the Nipah virus and Odisha's preparedness. Consider the following statements. Nipah virus is a zoonotic disease with fruit bats as its natural reservoir. Odisha has reported confirmed Nipah cases following detections in West Bengal. Disease surveillance and association protocols are key components of the Nipah preparedness. Answer कौन हबो? Very easy question. गोटे eliminate कर देले answer आसी जिवो एथरो. आंसर आसिलानी जे आंसर ए दौचंदी तांकर आंसर करेक्ट अच्छे SSEPD NIEPID MOU to strengthen support for persons with intellectual disabilities. Last current affairs आजिर क्लास रो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्यूरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज से गोटे MOU साइन करछंदी माने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करछंदी विथ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स एंड इंटेलेक्चुअल disabilities NIEPID
to strengthen early identification, education, capacity building, and community awareness for persons with intellectual disabilities across Odisha. Objective होची गोटे structured collaboration को establish करिबा to implement the NIEPID developed curriculum framework in grant in 8 special schools under SSEPD. Coverage होची जो छुआ माने कर intellectual disability रहिची educators, caregivers and frontline workers सबू को कवर करिवे केवल चिल्ड्रेन माननको नुह टेन्योर रहिबो कि 3 वर्ष जाए जनवरी 16 रु जनवरी 15 2029 जाके एटा ଚାଲିବ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇପାରେ ବାଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କନସେଣ୍ଟ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେସନ କମିଟି ଫର୍ମ ହବ ଟୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ମନିଟର ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जो इंडिविजुअल माने तांकर सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस रही इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड अडैप्टिव बिहेवियर रिक्वायर्ड टेलर्ड एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल सपोर्ट तांको कुहा जाउची पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन डिटेक्टिंग द डेवलपमेंटल डिलेज एट अ यंग स्टेज एंड तांको टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड करिबा टू इंप्रूव लर्निंग सोशलाइजेशन एंड लाइफ आउटकम्स इनक्लूसिव एजुकेशन माने होची चिल्ड्रेन मान को एजुकेट करबा चिल्ड्रेन माने जो मानकर डिसेबिलिटी अच्छी से मान को एजुकेट करबा थ्रू एप्रोप्रिएट करिकुला ट्रेन्ड स्टाफ एंड सपोर्ट सिस्टम्स रिड्यूसिंग द सेग्रीगेशन एंड स्टिग्मा ग्रांट इन एड स्कूल्स जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस रहिले से माने गवर्नमेंट फंडिंग रिसीव करिवे टू डिलीवर पब्लिक एजुकेशन सर्विसेज की कंपोनेंट्स ऑफ द MOUs curriculum implementation using NIEPID frameworks capacity building of special educators caregivers and frontline workers training program and resource material development digital learning content and expert monitoring research and documentation including best practices and policy briefs community awareness to promote inclusion and reduce stigma advantage होची कि गोटे क्वालिटी अपलिफ्टमेंट होची इन स्पेशल एजुकेशन थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड करिकुला अर्ली सपोर्ट मिलुची जोटा कि ता परे जे कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट आउटकम रे परिणत हबो बा ताको इम्प्रूव करिवो स्किल्ड वर्कफोर्स वाया कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी थ्रू जॉइंट रिसर्च सोशल इंक्लूजन एंड स्टिग्मा रिडक्शन एट द कम्युनिटी लेवल इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी वाया JCC मॉनिटरिंग डिसएडवांटेज कौन कि इम्प्लीमेंटेशन वेरिएबिलिटी रही अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स जोटा कि डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट वेरी करूची ट्रेनर अवेलेबिलिटी एंड एजुकेटर रिटेंशन एटा भी गोटे प्रॉब्लम रही डिजिटल एक्सेस गैप्स फॉर ई लर्निंग कंटेंट मॉनिटरिंग इंटेंसिटी दरकार फॉर consistent outcomes sustained funding भी दरकार पैसा भी दरकार beyond the MOU period way forward की district wise rollout plan करा जाओ with clear milestones hybrid training करा जाओ माने both online और in person offline training करा जाओ for scale outcome dashboard गोटे maintain करा जाओ for JCC reviews early childhood screening को expand करा जाओ parent engagement को strengthen करा जाओ and community आउटरीच को भी स्ट्रेंथन करा जाऊ MOU सस्टेनेबिलिटी प्लान पोस्ट MOU सस्टेनेबिलिटी एंड स्केल अप ओके गोटे MCQ टे एठी आंसर करो and that is it for today with reference to the SSEPD NIEPID MOU in Odisha consider the following statements the MOU focuses on early identification curriculum implementation and capacity building for PWIDs a joint coordination committee will monitor and guide the implementation MOU the MOU is valid for 5 years starting January 2026. ओ सॉरी आउ गोटे अच्छी लास्ट करंट अफेयर्स आई जस्ट अज्यूम्ड कि सेटा थिला लास्ट बोली गौर पॉपुलेशन राइजेस टू 848 इन देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गोटे थर्ड गौर सेंसस कैरी आउट हेची देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रे रिकॉर्डेड 848 इंडियन बाइजन और गौर recorded हेचंदी indicating a sustained population increase due to focused habitat management and protection
सेंसस विंडो जनवरी 5 रु 7 थिला देन एरिया एतिकी एतिकी एरिया कवर हेची एक्चुअली एडा केते एरिया कवर हेची इंपोर्टेंट नुह सेंसस अक्रॉस 73 सेंसस यूनिट्स मेथड होची कि डायरेक्टली काउंट करा जाईची 155 पर्सनल्स इंक्लूड थिले एंड डायरेक्टली काउंट करा जाईची टेक एड्स 213 प्रेशर इंप्रेशन पैड्स एंड 103 कैमरा ट्रैप्स यूज करा जाईतिला ट्रेंड अक्रॉस द सर्विस नवेम्बर 1st रे एतिकी गॉर्स एंड एतिकी हर्ड्स काउंट कराई दिस दिस द काउंटिंग द नंबर्स लास्टली खाली एतिकी मन रखिबो कि 848 गॉर्स और 69 हर्ड्स एटा भी एते इंपोर्टेंट नो बट जस्ट नॉट वेरी इंपोर्टेंट खाली एतिकी मन रखिबे कि जहाँ भी तांकर पॉपुलेशन थिला पॉपुलेशन रे इंक्रीज देखा जाइए डेमोग्राफी अराउंड 30% जुवेनाइल्स अच्छी सिग्नलिंग हेल्दी ब्रीडिंग माने ओवरऑल इम्प्रूवमेंट अच्छी तांकर पॉपुलेशन रे सफारी जोन 98 गॉर्स इन 8 हर्ट्स बूस्ट द वाइल्ड लाइफ टूरिज्म गौर गौर होची इंडियन बाइजन भी ताको कुआ जाए एटा होची इंडिया रा लार्जेस्ट वाइल्ड कैटल स्पीसीज जहार स्टेटस होची से शेड्यूल 1 अंडर रे प्रोटेक्टेड एनिमल हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन ताको प्रोवाइड हुए एडल्ट मानकर वेट अराउंड 60 टू 800 600 टू 800 kgs स्पीसीज स्पेसिफिक हैबिटेट मैनेजमेंट टेलरिंग हैबिटेट ग्रासलैंड बैम्बू ब्रेक्स टू अ स्पीशीज फीडिंग एंड बिहेवियर टू इंप्रूव सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन डायरेक्ट काउंट मेथड एथरे यूज करा जाइछि कि गणा जाइछि ऑब्जर्वर से माने गणी चंदी एनिमल मान को डायरेक्टली विद इन द डिफाइंड यूनिट्स आ एटा बेस्ट व्हेन विजिबिलिटी एंड टेरेन परमिट प्रेशर इंप्रेशन पैड होछि एटा एटाकू यूज करा जाय टू ट्रैक एगुडी होछि ट्रैक पैड्स दैट कैप्चर द फुटप्रिंट्स एडिंग प्रेजेंस एंड abundance estimates एटा होछि गोटे फ्लैगशिप स्पीसीज गोटे कैरिस्मेटिक स्पीसीज यूज टू ड्राइव द जस्ट अ सेकंड conservation attention and habitat protection okay increase केमिति हेले जो grassland bamboo mosaic develop करागला for grazing and browsing year round forage with grasses like heteropogon these are the grasses name of the grasses are not important strict protection of continuous monitoring through रू भी से माने राइज हेइचंदी तांकर पॉपुलेशन 6 मंथली सेंसस कंडक्ट करा जाउची सिंस नवंबर 2024 प्रति 6 मास रे गणा जाउची प्लस मंथली बर्थ रजिस्टर तांकर करा जाउची रिजल्ट राउंड द ईयर ब्रीडिंग अनयूजुअल एज गौर ब्रीडिंग इज ऑफन सीजनल एल्सवेयर एडवांटेज कोन कि बायोडायवर्सिटी सक्सेस वन ऑफ द ईस्टर्न इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट गौर स्ट्रॉन्गहोल्ड्स population stability achi high juvenile share ensures future recruitment science led management evidence based habitat interventions ecotourism gains reliable sightings at the safari zone landscape health healthy unregulated populations reflect robust ecosystems disadvantage कौन कि human wildlife interface crop depredation risk रही near the fringes carrying capacity sustained growth needs habitat expansion or maintenance monitoring cost take on manpower intensive climate variability droughts could affect the forage availability okay way forward कौन जो 6 monthly census जोटा एबे कंडक्ट करा जाउची ताको मेंटेन करा जाऊ एंड मंथली बर्थ ट्रैकिंग को भी मेंटेन करा जाऊ ग्रासलैंड रिस्टोरेशन को एक्सपांड करा जाऊ एंड बैम्बो मैनेजमेंट करा जाऊ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन को आहुरी स्ट्रेंथन करा जाऊ सो फॉर एग्जांपल अर्ली वार्निंग और कॉम्पेंसेशन एटसेट्रा टूरिज्म मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करा जाऊ विद द कंजर्वेशन सेफगार्ड्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेब्रिगर्ड स्पीसीज स्पेसिफिक मॉडल को रेप्लिकेट करा जाऊ इन अदर लैंडस्केप्स ओके MCQ with reference to the Gaur population in Debrigad Wildlife Sanctuary, consider the following statements. The latest census recorded 848 Gaurs showing a steady increase across 3 surveys. A high proportion of juvenile indicates a healthy and stable population structure. The census relied only on the camera traps and did not use the direct counts. What will be the correct answer?
Jyotsna A कहउछंदी very good, A is the correct answer. So thank you for watching. That is it for today. And जहाँ भी MCQ मुएठी क्लास वर्क और होमवर्क रे देइची, सो जी भी एथरे आंसर करिसेंदी समस्ते प्राय तो ठीक ही आंसर करिसेंदी, वेल एंड गुड. सो जो माने रिकॉर्डेड देखिबे से माने कमेंट सेक्शन रे आंसर करि परिबे. नेक्स्ट क्लास रे आमे आगु जो वीक आसुची तार आमे करंट अफेयर्स डिस्कस करबा एज इट इज, एंड जो एमसीक्यू आज मु देछि तार आंसर एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस हबो. बट प्रतिटी क्लास आगु मु एडवाइस करबी कि समस्ते ता पूर्व क्लास को आउथरे रिवाइज करिके आसीथिबे, एंड रिवीजन पर्पस पई कि पीडीएफ वीडियो भी देखि परिबे और पीडीएफ भी प्रोवाइड हे जिवो. पीडीएफ रो लिंक कमेंट सेक्शन को जाइकी डाउनलोड करि परिबे, कमेंट की डिस्क्रिप्शन रे जाइकी डाउनलोड करि परिबे, जोटी भी प्रोवाइड होतिबो. सो ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग.